Hello students, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. In today's session of UPSC CSAT practice series, we are going to discuss a very important passage of 2021 CSAT paper. In this passage of L3 level, the author has asked you about assumptions, that you need to tell the assumptions based on the given information in the passage. It is a question of level 3 difficulty. It is a difficult question. It can get you confused and waste your important time that you can utilize in doing other questions as well. As we have already discussed in previous session that L3 level questions consume more time. And if you want to do those questions, you should be very good at practice. Your accuracy should be very good. But if you are facing confusions in those L3 questions and the questions of assumptions, then you can directly skip those questions and move to other questions, because you can do those questions which are left easily. Clear? So let's just understand the passage, what it has for us, and then we will try to solve this passage. So the passage starts on a note where it talks about fig trees. Fig trees are considered sacred in India, East Asia and Africa, and are common in agricultural and urban landscapes where other large trees are absent. So basically it has mentioned, or it has started with the introduction of fig trees. In natural forest, so we are talking about the natural forest here, fig trees provide food for wildlife when other resources are scarce, means कम है, and support a high density and diversity of frugivorous fruit eating animals. तो उनको जो है डेंसिटी और डाइवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए ये फूड प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? इफ frugivorous birds and bats continue to visit fig trees located in sites with human disturbance, sacred fig trees may promote frugivorous abundance. मतलब इनकी वजह से इनका जो नंबर है वो बढ़ सकता है. क्लियर? तो जैसा कि आपने इस लाइन में पढ़ा कि अगर फ्रूगीवोरस बर्ड्स और बैट्स फिग ट्रीज को विजिट करते हैं और इनसे ही अपना फूड लेते हैं, तो आगे जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस वाला एरिया है, अगर जहाँ पर ये ह्यूमन डिस्टर्बेंस के साथ सिचुएटेड होते हैं ट्रीज, वहाँ पर सैक्रेड फिग ट्रीज इनका नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं. फ्रूगीवोरस एनिमल्स का जो नंबर है वो बढ़ा सकते हैं. बेसिक हमें एक डेफिनेशन मिली. हाउएवर इट इज़ अ फिलर. इससे कोई इन्फॉर्मेशन आपको एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मिलती जो आपको आंसर करे क्वेश्चन में, बट फिर भी अगर दिया गया तो पढ़ना है. Next, under favorable microclimate, plenty of seedlings of other tree species would grow around fig trees. मतलब फेवरेबल अगर माइक्रो क्लाइमेट मिल जाए तो इसके आसपास और भी पेड़ जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ग्रो करेगा. क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या है? अजम्पशन वाला है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी होती है? क्रक्स की हेल्प लेनी होती है या फिर मेन एम की हेल्प लेनी होती है. तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड. ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव, द फॉलोइंग assumptions have been made. First statement: fig trees can often be keystone species in natural forests. Now what are keystone species? Keystone species वो होती हैं that help define the entire biosphere, या फिर अगर हम कहें तो एक एनवायरनमेंट को जो डिफाइन करने की कोशिश करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं. तो यस, हमने वहाँ पर भी देखा है इन नेचुरल फॉरेस्ट फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ. तो दे आर डिफाइनिंग और ट्राइंग टू डिफाइन द एंटायर बायोस्फेयर या फिर वाइल्ड लाइफ सिचुएशन को ये डिफाइन करने की कोशिश करती हैं. तो यस, दिस इज द अजम्पशन. ठीक है, ये करेक्ट है आपका आंसर. अब फर्स्ट करेक्ट हो गया. नाउ वी नीड टू एलिमिनेट. अब हमें एलिमिनेट करना. अब आप देखो, एक तो इसमें 1 और 2 में दिया गया है 1, इसमें नहीं है, ये आपका आंसर नहीं बन सकता, ये आपका आंसर बन सकता है. क्लियर? तो पहली चीज, जब आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ज़्यादा मिल जाएं, देन यू नीड टू यूज़ द एलिमिनेशन मेथड. और एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको पहली स्टेटमेंट को सही से जांचना बहुत ज़रूरी है. क्लियर?
If you find it correct, then accordingly आपका जो process है वो आगे बढ़ेगा. If you find it incorrect, then along with that also. Next, fig trees can grow where other large woody species cannot grow. Now woody species, what do you mean by woody species? यहाँ पर एक word उसने mention किया था, एक phrase where other large trees are absent. That doesn't mean that other woody species cannot grow here. ठीक है, तो एक तो ये चीज गलत हो गई. प्लस यहां पर जो लास्ट लाइन उसने लिखी है, अंडर फेवरेबल माइक्रोक्लाइमेट प्लेंटी ऑफ सीडलिंग्स ऑफ अदर ट्री स्पीशीज वुड ग्रो. सो दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन is not correct according to the information given in the passage, and that can't be your assumption. So I hope that you have got this point. Now second आपका गलत हो गया. ठीक है, अगर आप देखें तो बेचारा सेकंड यहाँ पर था. आंसर क्या बचा? Fourth one, 1, 3 and 4. Now you don't have to look for the third and 4, but to improve your accuracy, to improve your understanding of the passage, you need to go through the third and fourth statement. Let's just understand. Fig trees can grow, sacred trees can have a role in biodiversity conservation. So यहाँ पर जो frugivorous abundance थी, ठीक है, this is an example of biodiversity conservation. ठीक है, this is also an example of biodiversity conservation. So yes, this is the assumption. Next, fig trees have a role in the seed dispersal of other tree species. So basically from the last line or the conclusion that we have in the passage, we can say that this is the assumption. Fourth statement is the assumption, and that supports the crux. So I hope you have got the thing that was asked in the passage. This was not a difficult passage, it was a confusing passage. Its language is slightly different that we generally read in daily life. Apart from that, the question level was of L3 level that we have already discussed, toughest of all three. Let's just understand the analysis of the passage. So on the basis of the language of the passage, we have told you guys that language was some kind of familiar, but I would say moderate. So you just have to understand and go through the relations or interconnections that were mentioned in the passage, and the level of the question was of L3, which means it was a tough question to answer. अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आंसर करने हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड एक्यूरेसी, और बिना तैयारी के आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आंसर करने जाएंगे तो ये आपका टाइम भी वेस्ट कर देगा. ठीक है, आई होप इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने चाहिए. आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू इन बिल्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. So please do like it, share it with your friends, and subscribe our YouTube channel if you are new to the YouTube channel. Thank you guys. Thank you very much.